us their basic details, then we can help them to create a resume. Okay, is my idea clear to all? Where can you just Yes, please Surya. repeat the sound got disconnected? Okay, so I am telling that like we will be for now building what we will be doing is we will be referring to a look. If you can see my screen, I have opened a design. Okay, so using that we will be wait, let me do one thing. Yes. So you can see that we will be recreating this design. Okay, we will be building an Android app that has this. For today, it will be a static application that shows only your resume. Okay. But by tomorrow, we will make that application dynamic. So we will be integrating Firebase, using which we will be storing the data of the uh, of the what we say client of the user. Okay, we will be storing the data of the user, and then we will be building an app out of that data. Not app, we will build building a uh, resume out of the provided data, but we will be doing that tomorrow. Is that clear? Yes, where? So yes, you can put this in your. Okay, we have wrapped up that your basic fundamentals of your counter app. उसके अगर उसके ऊपर अगर तुम कुछ और ऐड करना चाहते हो, हुआ, इफ यू वांट टू जैसा क्या बोलते हैं जो सा हम लोग अभी किए थे ना, तुम्हारा लाइक द ऐप वी वेर रेफरिंग टू, जौन सा हमारा जौन सा ऐप हम लोग रेफर कर रहे थे उसका जौन सा जैसे था, वैसे अगर तुम डिट्टो बनाना चाहते हो तो बाय द एंड ऑफ 30th डेट तुम लोग कर लोगे, क्योंकि हम आगे ग्राफ्स भी पढ़ेंगे, जो एनालिटिक्स डैशबोर्ड वहाँ पे था ना, तो वहाँ पे हम लोग को कैसे करके करना है, एनालिटिक्स कैसे यूज़ करना है, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। फिर गूगल साइन इन वहाँ पे था, तो हम लोग गूगल साइन इन कल पढ़ेंगे। ठीक है, फायरबेस को यूज़ करके हम लोग गूगल साइन इन कैसे करते हैं वो कल पढ़ेंगे हम लोग को। तो उसके बाद क्या होगा ना, तुम लोगों पार्टली पार्टली उसको लेके तुम्हारा इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन दैट काउंटर ऐप। फिर वो धीरे धीरे तुम्हारा अ, देखो आज जैसे हम लोग यूआई पढ़ेंगे, तुम लोग आज जाना और पहले ये वाला पोर्टफोलियो वाला चीज कर लेना, फिर वो जो यूआई वाला जो है ना, ठीक है, जाना और वो काउंटर ऐप का यूआई, आई विल ऑल्सो पेस्ट द लिंक ऑफ I will also paste the link of our the app we were referring to. उसके बाद you can recreate that. समझे? भैया डिप्लॉय करना भी सीखेंगे ना हाँ उसके बाद? हाँ एग्जैक्टली, उसके बाद क्या होगा ना कि तुम वी विल लाइक हम लोग क्या करेंगे, तुम सबका एक एक ऐप हुआ, नॉट एक एक, देखेंगे हम लोग जितना ज़्यादा हम लोग को पब्लिश कर पाए उतना ज़्यादा तुम लोगों का ऐप कंसोल अकाउंट से पब्लिश करेंगे। ठीक है, वो भी हम लोग सीखेंगे कैसे करके, एंड हम लोग को उसका डिलीवरेबल लिंक्स भी देंगे जो कि यू कैन शेयर टू योर फ्रेंड एंड फ्लेक्स अबाउट योर एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्किल्स। ठीक है। ओके। यस भैया। हाँ, तो Yes, भैया. लेट मी शो यू समथिंग हुआ। सो इंडस्ट्री में एक्चुअली में कैसे होता है मैं तुमको दिखाता हूँ। गिव मी अ मिनट प्लीज।
Yeah. So देखो, what happens is your UI team or the design team will give you this kind of design. Okay. So this is a Figma design जहाँ पे तुमको okay, anybody knows about wireframe design? What is a wireframe design? बेसिकली देखो ये सब एंड्रॉयड के बाहर का कंसेप्ट हैं, बट ये डेवलपमेंट के कंसेप्ट रिलेटेड हैं। तो ये चीज बस एंड्रॉयड के हिसाब से मत पढ़ो, ठीक है? ये तुम जाने रहो ताकि कल को व्हेन समवन गिव्स यू अ वायर फ्रेम और समथिंग लाइक दैट, देन यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है? एनीबॉडी हैज आइडिया व्हाट इज अ वायर फ्रेम? आई गेस नो भाई। नो भैया। Okay, so no issues. Wireframe, देखो, what happens is, you know what is a button? Button is like what we do. हम लोग क्या करते हैं ना कि when we are designing, जब हम लोग positions को सोच रहे होते हैं कि in which place the button should be placed, in which place a text view should be placed, how should a image view should be, the image view should be a square one or a rectangular one or a circle one. Okay. So to represent that, what we do, we use wireframe, and in wireframe we don't define the color of the that component. We don't discuss about what is written. Sometimes we also talk about what is written in that component, but we don't discuss much about the UI of it. We just define the placement of it. It is the main purpose of wireframe. So wireframe gives us a skeleton like a HTML thing, but HTML पे भी बहुत सारा चीज है जो कि हम लोग को HTML पे भी एक बटन का बहुत सारा एट्रीब्यूट दिख जाता है, उसका डिजाइन एस्पेक्ट नहीं होता है बट बहुत सारा एट्रीब्यूट होता है। पर लेट मी शो यू हाउ दिस वायर फ्रेम लुक्स लाइक, ठीक है? सो एक ऐप का पहले क्या बनता है, वायर फ्रेम बनता है। इस पे देखो, नाउ इट, यहाँ पे तुम देखो क्या कंपोनेंट होगा वो हमको नहीं पता, पर हमको पता है कि उसका पोजीशन क्या होगा, ठीक है? You see, this is a wireframe. Here, this box tells कि there will be a image view. Okay, these are like, it tells that in a screen, here there will be a component, 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 but it doesn't tell us which component it will be. Okay, because तब तक हम लोगों का UI का कुछ नहीं बना रहता है। Then in the next iteration, एक्सक्यूज मी भैया। हाँ हाँ, yes, please. मैं थोड़ा दोबारा बताना, आई गेस स्क्रीन फ्रीज हो गया था। ओके, अभी स्क्रीन दिख रहा है, इज इट फाइन? यस यस। एंड माय ऑडियो इज आल्सो क्लियर, कुछ बफर या इको या कुछ नहीं हो रहा है? नहीं नहीं। हाँ। तो बेसिकली होता क्या है कि देखो, जब हम लोगों को एक डिज़ाइन बनाना होता है, तो वो डिज़ाइन का, वो कंपोनेंट का एट्रीब्यूट को हम लोग को पहले इग्नोर करते हैं। वी डू नॉट केयर अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपोनेंट। फर्स्ट वी डिसाइड वेयर द कंपोनेंट शुड बी प्लेस्ड, ठीक है? तो उसीलिए व्हाट वी डू, वी मेक अ वायर फ्रेम। So in that wireframe, we define at what place, what type of component will be there. Okay, here to also the type of component has not been told, but if you check wireframe hand drawn wireframes, then so you see here, there, yes, like someone has drawn this your wireframe. Here you can know that this is a your this is a video view. Okay, it is a web your sorry your image view. This is some text view. Okay, so you only know where the view is placed, but how that gonna look, we don't know much about it, isn't so? Is it clear,
समझ में आया Yes, व्हाट भैया. व्हाट आई एम टॉकिंग? Hmm. तो होता क्या है कि हमको बस इतना पता है कि हम कहाँ रखेंगे, हमको ये नहीं पता कि क्या रखेंगे, कैसे दिखेगा क्या. Then comes, this is the very fundamental stage of design. Then the team goes on, the UI head or the UI team, it creates a like wait. Yeah, so my screen is visible, right? Okay, so what now, then the team gives us a design like this. Okay, so it tells us how the app should flow. Okay, how should the app look like? So I am not supposed to show you this design because this project is not yet ready, but I don't have any reference, so I'll show you. So उसके बाद क्या होता है ना, we get a design like this. Okay, when this is selected what will happen, when this is selected what will happen, when this is selected how the UI will look like. Okay, then what we do, okay, this also tells us about how the flow will go. ठीक है, ये हमको ये भी बताता है कि कैसे वो फ्लो होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उस पे क्लिक, लेट मी शो यू वन मोर यूआई डिज़ाइन, ताकि तुम लोगों को पूरा फ्लो पता चले. ठीक है, तो ये हमको कहाँ से मिलता है, वी गेट दिस फ्रॉम द डिज़ाइन टीम. ठीक है. ये डिज़ाइन आने के बाद वी लुक एट दिस डिज़ाइन एंड देन वी बिल्ड द ऐप. ठीक है. यस, सो दिस इज अ कंप्लीट यूआई. सो अगर तुम देखोगे, इफ अ नॉन टेक्निकल पर्सन वॉच दिस, उसको लगेगा कि दिस इज अ टोटली एन ऐप, पर ये नहीं है, दिस इज ओनली यूआई डिजाइन. ठीक है, ये बस एक एनिमेशन टाइप रहा है. वाह, इसको हम लोग को देख के हम लोग को रिक्रिएट करते हैं पूरा यूआई को. ठीक है, यू गॉट एन आइडिया. अब समझे कैसे करके Yes, एक्चुअली भैया. में एक ऐप का या फिर एक वेबसाइट का डिज़ाइन बनता है. Yes, भैया. तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से लेके एक प्रॉपर यूआई तक ऐसे बनता है. उसके बाद हम डेवलपर लोगों का काम शुरू होता है. ठीक है, इतना तक हम लोगों, वी आर जस्ट मियर वॉचर, हम लोगों, वी आर जस्ट, हम लोगों बस देखते रहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं इस फेज तक. अब देखो, ये किसी का एक डिज़ाइन है. ठीक है, हम लोग को ये डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे. ठीक है. So what we will learn in this, we will learn how to use relative layout. Okay, how to use constraint layout, how when to use constraint and when to use relative, when to use linear layout. Okay, मैं तुम लोगों को theoretically बता दिया हूँ कि कहाँ कैसे क्यों यूज करना है, but I have never shown you कि हम लोग जब पे एक रिलेटिव लेआउट यूज करते हैं तो कैसे करके उसको यूज करते हैं, उस पर क्या क्या चीज़ हम लोग लिखते हैं. वी हैव नेवर डिस्कस दैट. So we will do that today. So first of all, obviously we will make a new app project. Okay, and in that project we will name it something as my resume. Okay, let us make this capital. Okay, and this should be groovy. Yes. Yeah, so by the time uh, this UI is getting fixed,
आई टेक अ चेक। हाँ, तुम लोग को रूम मतलब अपने after the session end, and since we had a break for 3 days, okay, we will not be continuing classes on Sunday, क्योंकि that is the only day that this GIT gives me, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उस दिन पे तुम भी थोड़ा अपने दोस्तों के साथ चिल विल मारो। अगर किसी दिन हुआ कि तुमको प्रोजेक्ट वोजेक्ट कुछ हेल्प चाहिए होगा तो डोंट आफ्टर मतलब डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक टू रीच मी आउट, बट आई गेस संडेज आर फॉर एंजॉयमेंट, सो वी विल नॉट कीप एनी क्लासेस ऑन दैट डे। ओके, सो एंड उसके अलावा अदर 2 days आई वॉज रियली बिजी विथ सम ऑफ द स्टफ्स, सो इसीलिए वी डिड नॉट आई डिड नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू द क्लासेस, तो इसीलिए आई कुड नॉट। बियॉन्ड दैट हमारा ग्रेडल बिल्ड हो चुका है। कोई बताओगे कि किसी ने वो प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट किया काउंटर ऐप? मैं जहाँ तक आपने बताया था वो उतना तक बता दिया। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और आपका शायद वो इमेज नहीं था, मतलब बताए थे आप, बट फाइनल में नहीं था इमेज, हाँ वो वाला हाँ भी ऐड हाँ, करके। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो उस पे तुम क्या डेवलपमेंट आगे कर सकते हो ना, कि लुक, अब आज हम लोग को इंटेंट पढ़ लेंगे, ठीक है? वंस वी रीड अबाउट इंटेंट, कैसे करके हम लोग को इंटेंट को चेंज करते हैं, तुम उस पे क्या कर सकते हो कि यू कैन क्रिएट अ मेन्यू, ठीक है? वो मेन्यू पे तुम सिलेक्ट करोगे तो राधा 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 लिखेगा, ठीक है? फिर उधर राधा नाम जप करेगा, बट वो साइट पे और एक मेन्यू होगा जहाँ पे राम लिखा रहेगा, तो जब तुम राम भगवान का सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे हर क्लिक पे हर एट्रीब्यूट मतलब हर क्लिक पे जो साउंड आएगा वो आएगा राम राम राम, फिर तुम्हारा जो टेक्स्ट व्यू आएगा वो टेक्स्ट राम राम आएगा। तो ये चीज़ कैसे करना है, यू टेक दैट एज ए चैलेंज, वो तुम लोगों को करना, बट उसको उस ये करने के लिए तुमको जो जो भी चीज़ चाहिए होगा आज मैं वो तुम सबको बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि देखो एट द एंड क्या करना है, कैसे उसको क्रिएटिव करना है, वो हम लोगों को डिस्कशंस के थ्रू ही आएगा, वाह, एंड वो तुम लोग कर लोगे, आई नो दैट, ठीक है? सो पहला चीज, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, सब कोई प्रोजेक्ट बना लिए नया वाला? या बिफोर दैट हम क्या करते थे, वी नीड टू कनेक्ट इट टू गिटहब, दिस इज नॉट अ रिक्विजिट, बट हम लोग को इसको करते हैं ताकि हम लोग को अम, हमेशा अपना रेपो को अपडेटेड रखें, ताकि कहीं पे वेर एवर वी गेट स्ट्रक वी कैन कम बैक, एंड वी इट इज लाइक अ सेफ्टी नेट ऑन विच वी कैन फॉल बैक, ठीक है? यस, सो we will be starting with relative layout, okay? So can anyone make me remind what is relative layout in your वेब वेब डेव पे कोई रिलेटिव लेआउट यूज किए हो? अम, मैं यूज तो किया था। यूज किए थे, भूल गए हो? ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब बहुत पहले किया था। आई थिंक इट्स लाइक कोई दूसरे कंपोनेंट के रिलेटिव कहाँ पे वो पोजीशन होगा ये बताता है शायद। हाँ एग्जैक्टली, वी टेक अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट एंड ऑन द basis we either take a reference object, or we use body as our reference object, and using that reference object every other element is placed, ठीक है? That is relative layout, okay? And linear layout I have already discussed. If you want to place everything in a single line, be it in a horizontal line or a vertical line, then we use linear layout. And constraint layout is when you want your app to be constrained to the surrounding, okay, to the surrounding as in the walls of different component, तब हम लोग वो यूज करते हैं constraint layout, ठीक है? So why did we choose relative layout? Understanding this is very important. So you see,
when you see this design, okay, what is that design? Yes, when you look into this design, so you can see that this image is there. Okay, so if you take one linear layout, then we will have to fragment this into multiple linear layout. हमको एक एक linear layout अगर हम लोग लेंगे तो okay, it is not like we cannot take a linear layout, we can surely take a linear layout. Can anyone give me an approach कि कैसे हम लोगों का linear layout दिखना चाहिए so that we can implement this thing? Yeah, you guys do here. एक बार सोचो कि अगर हम लोग को लीनियर लेआउट जो कि लीनियर रहता है मतलब कि लाइन में रहता है, ठीक है, उसको अगर हम लोग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? मैं मल्टीपल लेना पड़ेगा ना लीनियर लेआउट। मल्टीपल तो लेना ही पड़ेगा, पर कैसे लेंगे, मतलब कैसे एज इन हम लोग को क्या क्या करेंगे तो हम लोगों का जो ये सोच रहे हो वो अचीव हो सकता है, क्या क्या करेंगे एज इन कौन सा वाला चीज को हम लोग को वर्टिकल लिनियर लेआउट पे डालेंगे, कौन सा वाला चीज को हम लोग को हॉरिजेंटल लिनियर लेआउट पे डालेंगे? लाइक कैन एनीवन थिंक ऑफ इट? मैं कॉन्टैक्ट पहले अबाउट मी तो एक ही में अबाउट मी और उसके डिस्क्रिप्शन वो एक वर्टिकल लेआउट में रहेगा, हाँ हाँ, एग्जैक्टली। और कॉन्टैक्ट्स के नीचे जो है वो हॉरिजॉन्टल लेआउट्स में रहेगा। ओके, देखो, अगर तुम दोनों को अगर हॉरिजेंटल लेआउट ले लोगे, आई गॉट यू व्हाट यू आर सेइंग, यस इट इज अ हॉरिजेंटल लेआउट, बट डोंट यू थिंक उसके अंदर हमें एक एक वर्टिकल लाइक एक पहले वर्टिकल लेआउट लेना पड़ेगा, उसके अंदर हम एक हॉरिजेंटल लेआउट पुट करेंगे? यस एग्जैक्टली, या तो हॉरिजॉन्टल के अंदर वर्टिकल है, वर्टिकल के अंदर हॉरिजॉन्टल है। हाँ हाँ, एनीथिंग कैन वर्क। बट देखो इस पे क्या हो रहा है ना, बहुत सारा चीज हम लोगों को माथापच्ची करना पड़ रहा है। बट अगर हम लोग को रिलेटिव लेआउट लेंगे और उसके अंदर हम लोग को कुछ कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या पता हम लोगों को, मतलब क्या पता नहीं एग्जैक्टली हम लोगों को थोड़ा चीज़ें आसान हो जाएगा, है ना? क्योंकि हम लोग को उस पे क्या वे रेफरेंस है। कांस्टेंट क्यों नहीं रहे? हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अच्छा ठीक है, कंस्ट्रेंट हम लोग क्यों नहीं लेंगे? कांस्टेंट में क्या होता है, व्हेन यू बिल्ड ऐप यूजिंग कांस्टेंट लेआउट, तो क्या होता है कि व्हेन यू ओपन ऐप इन सर्टन साइज, जैसे तुम बनाए हो डिजाइन 9:16 एस्पेक्ट रेशियो पे, बट यू आर ओपनिंग दैट इन Samsung S24 और अ लार्जर फोन लाइक इन अ टैबलेट, जो कि प्रोबेबली तुम्हारा सिक्स सिक्स टू नाइन सॉरी 9:16 एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन नहीं करता होगा, उसका कुछ और एस्पेक्ट रेशियो होगा। तब क्या होता है ना, कंस्ट्रेंट लेआउट कंस्ट्रेंट को मेंटेन करने के लिए तुम्हारा यूआई को ऊपर नीचे कर देता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीज़ें ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है, ऐसे होता है कि चीज़ें स्मज हो जाएंगे। तो उस चीज को हम लोग को अवॉइड करने के लिए, देखो ये चीज ऐसा नहीं है कि तुम अचीव नहीं कर सकते हो, कंस्ट्रेंट लेआउट पे भी तुम बहुत अच्छा यूआई अचीव कर सकते हो, बट वो तुम्हारा बाय एक्सपर्टीज आएगा। बाय एक्सपर्टीज तुमको प्रॉपर्टी पता चलेगा, प्रॉपर्टी लोगों का नाम पता चलेगा, जिसको तुम यूज कर करके कंस्ट्रेंट लेआउट पे भी एक बहुत अच्छा खासा ये क्या बोलते हैं यूआई डिजाइन कर सकते हो, एंड इट विल कम ओनली आफ्टर प्रैक्टिस, ठीक है? It is a intuition, so you cannot force that intuition. Once you start building app using linear layout, table view, then your relative layout, and some part you can also design with constraint layout, then you can continue to design something solely by constraint layout, समझे? इस पे हाँ, एक्चुअली कंस्ट्रेंट लेआउट पे तुमको बहुत सारा एडवांटेज मिलेगा, तुम लोग को उसको बाय ड्रैग एंड ड्रॉप सब चीज कर दोगे, पर
जब तुम बड़ा स्क्रीन में उसको खोलोगे या फिर जो सा स्क्रीन तुम लिए नहीं होगे उसको उसके अलावा कोई स्क्रीन में खोलोगे तो बहुत आगे पीछे हो जाता है यूआई। तो इसीलिए सबसे बेस्ट है रिलेटिव लेआउट स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, so let us jump to the coding part. So here give me, so दो सब कोई प्रोजेक्ट बना लिए, नया प्रोजेक्ट और एम्प्टी प्रोजेक्ट। Well, I'll be having some problem, so I'll make it later. I'm just watching right. Okay, no issues in that. Give.